Hello students, today we are going to study about linear equations for class 8. Before continuing it, first you will know about what is algebraic expression. You all must have studied about it in previous classes. Let us give a quick revision. So algebraic expression is basically an expression involving constant and variables. Constant are those whose value does not change and variables are those whose values vary. तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को रेफर करना है तो आई राइट अल्फाबेट्स टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर वेरिएबल जस्ट एज एक्स वाई ए बी सी वट एवर. सो फॉर इंस्टेंस algebraic expression can be written as 2x plus 1. This is a form of algebraic expression. 2x is also an algebraic expression. 2x square plus 3x plus 5 is also an algebraic expression. Now comes to the point, what is an algebraic equation? अब मैंने बात यहाँ पर भी अलजेब्रिक की करी, यहाँ पर भी बस फर्क इतना है, मैंने यहाँ बोला एक्सप्रेशन और यहाँ बोला इक्वेशन. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म इक्वेशन, इक्वेशन इज बेसिकली इन्वॉल्विंग इक्वालिटी. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग एन इक्वालिटी साइन with your algebraic expression, that becomes an equation. So if I am writing 2x plus 1 equal to 5, this will not be termed as an algebraic expression, it will be termed as an algebraic equation because it is involving an equality sign. An equality sign means that the value of expression on the left hand side will be equal to the value of expression on the right hand side. In this case I am taking a number on the right hand side which is a constant term. Even if I am taking an expression, suppose I am writing 2x plus 1 equal to 3x. That means the value of 2x plus 1 will be equal to the value of 3x. So basically when I am talking about expression, it does not involve equality sign. When I am talking about the term algebraic equation, it involves an equality sign which indicates that the value of expression on the left hand side will be equal to the value of expression on the right hand side. Now what do you understand by the term linear? Linear means that the expression has the degree 1. Degree 1 means that the particular expression has a variable whose highest power is 1. That means 2x plus 1 is a linear expression, but 2x square plus 1 will not be a linear expression. Why? Because in this case the highest power is 2, the degree becomes 2, so it cannot be termed as linear. So when I am talking about the term linear equation, that means I have an expression of degree 1 with an equality sign. That means there will be a condition on the left hand side and right hand side whose value will be equal on both the sides. Up you must be clear with the term linear equation. Now comes the picture that what we are getting by this linear equation. So by linear equation we are going to get the value of the variable we are using in that particular equation. हम उस equation में जो भी variable use कर रहे हैं हमें linear equation को solve करके उस variable की value मिलेगी. अब कोई भी linear equation को solve करने के दो तरीके होते हैं. अगर मुझे linear expression को solve करना है तो मेरे दो methods होते हैं. The first method is balancing and the second method is transposing. Solving the linear equations by two methods. The first is balancing and the second is transposing. When we are talking about the method of balancing, that means कि आपको दो इक्वेशन को बैलेंस करना है. बैलेंस का मतलब ये होता है, सपोज let's take an example of a seesaw. How it will be in a balanced condition when the weight of the person sitting on either sides will be equal. That means दोनों साइड अगर इक्वल वेट है तो द सीसो विल बी इन अ बैलेंस कंडीशन. सेम आपका इक्वेशन के साथ है. आपकी इक्वेशन बैलेंस तब मानी जाएगी जब आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन यू विल परफॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल. सो इफ यू आर एडिंग समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन यू विल ऐड द सेम नंबर ऑन द राइट साइड एज वेल. If you are subtracting something on the left side, you will subtract the same number on right side as well. If you are multiplying a number on left hand side, you will multiply that number on right side as well. And if you are dividing some number on the left hand side, you will divide the same number on the right side as well. दोनों कंडीशन में जो आपको बेसिक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये, आप बैलेंसिंग में जो भी अपना ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका मोटिव यही होना चाहिए कि आपके इक्वालिटी साइन के एक साइड आइदर ऑन LHS और आइदर ऑन RHS अ सिंगल वेरिएबल शुड बी ऑब्टेन. यानी कि अगर आपका कोई
इक्वेशन लिखा हुआ है x के टर्म्स में, तो आपको सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में सिर्फ x मिलना चाहिए, और दूसरी साइड में सपोज इफ यू आर गेटिंग x ऑन LHS यू शुड गेट अ नंबर ऑन RHS एट योर लास्ट स्टेप। जब तक आप लास्ट स्टेप में आए तो आपको एक साइड मिलना चाहिए x और दूसरी साइड में नीचे उसकी वैल्यू। अब तरीका देखते हैं सॉल्व करने का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 4x - 2। अब इफ आई वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ बैलेंसिंग, ट्रांसपोजिंग मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट लेट्स यूज बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग में यू आर गिवन 4x - 2 इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो गया है। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है बैलेंसिंग से, तो आप जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म करोगे वही सेम चीज़ आप राइट हैंड साइड में परफॉर्म करोगे। मोटिव यही होना चाहिए कि आपको एक एक करके जिस भी साइड पर वेरिएबल लिखा है वहाँ पर लास्ट में सिर्फ वेरिएबल बचे। तो अगर आपको 4x - 2 की जगह सिर्फ x चाहिए तो आपको यहाँ से 2 भी हटाना होगा और 4 भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमूव 2 you have to remove -2। तो इफ यू वांट टू रिमूव -2 you have to add 2, क्योंकि अगर आप -2 में +2 करते हैं इट विल गेट कैंसिल आउट। सो व्हाट यू विल डू फॉर बैलेंसिंग, एडिंग 2 on both side। When you are writing this adding 2 on both side, you are actually using the funda of balancing because you are doing the same operation on both the side. What you will do now, 4x - 2 + 2 equal to 0 + 2. So you will get 4x here because -2 + 2 will cancel out, equal to 2. Now comes to the picture that you want to remove 4. 4 is in multiplication with x. If you want to remove 4, you have to divide 4x by 4. When you are dividing 4x by 4, you will get x. So now what you will do, dividing by 4 on both sides. So what you will do, 4x upon 4 equal to 2 upon 4. You divided by 4 on both sides. Here the 4 in the numerator and 4 is there in the denominator as well. It will get cancelled out. You will get just x here, and here you will get 1 upon 2. So finally you got your x as 1 upon 2. Now comes कि आप verify कैसे करोगे? You are solving a question. You need to verify that whether the solution is correct or incorrect. So for the condition of verification, you will solve the LHS of the equation. You will write solving LHS for x equal to 1 upon 2. Because you got the value of x as 1 upon 2, you will solve the LHS by putting x equals to 1 upon 2. You are getting 4 multiply 1 upon 2 minus 2. So here you are getting, this will get cancelled out. You are getting 2 minus 2 equal to 0, which is equal to RHS. On solving LHS, you are getting a number which is equal to RHS. Hence your solution is correct. So this is the way for solving an equation by using the funda of balancing. Now let's come to the point of transposing. जब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिंग की, तो बैलेंसिंग में तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को दोनों जगह कैरी आउट कर रहे थे, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोजिंग यू विल सिंपली पिक दैट नंबर व्हाट यू डोंट वांट इन LHS or RHS and you will take it on the other side of the equation. You will pick a number, take it on the other side. But आपको याद रखना है, in case of transposing, the plus changes to minus, the minus changes to plus, the multiplication changes to division, and the division changes to multiplication. On changing side, on changing side means if you are taking a number from left hand side, if it is under the mathematical operation of plus, then it will go under the mathematical operation of subtraction. If it is under the mathematical operation of subtraction, it will go for addition. For the case of multiplication, it will go for division, and when it is under division, it will go for multiplication. So when you are solving this particular equation by transposing method, what you will do, you will transpose will transpose 2 from left hand side to right hand side, transposing minus 2 from LHS to RHS. आपने 2 को उठाना है
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देना है. रूल के अकॉर्डिंग व्हेन यू आर ट्रांसपोजिंग अ नेगेटिव इट विल गो एज पॉजिटिव. आपको मिलेगा 4x इक्वल 0 प्लस 2. So you will get 4x equal to 2. Now 4 is under division, so transposing 4 is under multiplication. I'm sorry, transposing 4 from LHS to RHS. It is under multiplication. So when it will go towards RHS, it will go under division. So you will get x equals to 2 upon 4. And from here you get x equals to minus 2, x equals to 1 upon 2. For verification it will be same for even if you are following balancing funda or even if you are following transposing funda, the verification process will be same, that you will use this particular value on one side of the equation, you will solve it. If you are getting the answer equal to your RHS, then it is verified that your solution is correct. If there is some change, that means you have done some error while solving the question. Let's take one more example. upon 5x plus 3 equal 3 upon 5x plus 1. See, one important thing कि आपको दो मेथड्स पता है, बैलेंसिंग भी, ट्रांसपोजिंग भी. द क्वेश्चन कम्स कि कैसे पता चले कि व्हाट इज बेटर टू यूज इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हेन शुड आई यूज बैलेंसिंग एंड व्हेन शुड आई यूज ट्रांसपोजिंग. सो व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन involving variable, that means that for this particular case you are having a variable on the left side as well and you are having a variable on the right side as well. So in a situation when you are having a variable on both left hand side and right hand side, then the better method is transposing. But if you are having a case like in the previous question we had 4x minus 2 equal to 0, you were having variable on left hand side but a constant term on the right hand side. So in that case balancing would also be an easier method. But for the case when you are having a situation of having variable on both the side, take advantage of the case and use transposing instead of balancing. For this case, transposing you have to make sure that your variables should all together be on one side and the numbers should all together be on the other side. So first of all, to move 3 you will write transposing 3 from LHS to RHS. So what you will get, 2 upon 5x equal to 3 upon 5x plus 1. It was with plus sign, so here it will go with negative sign. You will get 2 upon 5x equal to 3 upon 5x plus 1 minus 3 minus 2. Different sign, subtract the number, the sign of the bigger number. So now you want to transpose 3 upon 5x from right hand side to left hand side. So transposing 3 upon 5x from RHS to LHS. It has no sign before it, so you will simply take it as a plus sign. When it will go towards LHS, it will go with a minus sign. So you will write 2 upon 5x minus 3 upon 5x equal minus 2. On solving it, the denominators are same, so there is no need to take the LCM. You are getting 2x minus 3x upon 5 equal to minus 2. Here you will get minus x upon 5 equal to minus 2. Again you are having 5 here. So to get simple x, you have to transposing 5 from LHS to RHS. You will get minus x equal to minus 2 multiply 5, because 5 was under division on LHS. When it will be moved towards RHS, it will go with the multiplicative sign. So here you will get minus x equals to minus 10. Now minus on both sides will get cancelled out. From here you will get x equals to 10. For verification, you will simply put x equal to 10 on LHS side, get a value, then you will put x equal to 10 on RHS side, right hand side, you will get a value. If you are getting same values on both the sides, that means the answer is verified, it is correct. आपकी वैल्यू पुट करोगे आप पहले LHS में,
If you are getting a value, then you will put the x equals to 10 in place of RHS. x की जहाँ में पुट करोगे आप x इक्वल टू 10. अगर आपकी सॉल्व करने के बाद LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आती है, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन 100% करेक्ट है. इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, दैट मीन्स यू हैव डन एन एरर इन दी क्वेश्चन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल ट्राई फ्यू क्वेश्चंस. And solve it. If you are having any sort of queries in these questions, you will drop down in comment section. One very important thing for this question, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली कि आपके जो जितने भी वेरिएबल्स है सब लेफ्ट हैंड साइड पर है. x और x अपॉन 2 आप उन्हें सॉल्व कर लोगे एलसीएम को लेके. 1 को यू विल टेक इन दी RHS, आप उसे ट्रांसपोज कर दोगे फ्रॉम LHS टू RHS. उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आप बाकी नंबर्स को ट्रांसपोज करोगे. ट्राई दिस क्वेश्चन. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, drop down in the comment section. I'll solve it in the next video. Thank you.